Gentlemen, boys and girls, brace yourself. It's the IDFC First Bank Ranji Trophy 24-25 Group D game between Delhi and Railways, and we are coming to you live from this iconic Arun Jaitley Stadium, nestled in the vibrant capital city, New Delhi. Crowd have come in huge numbers. We saw them yesterday. They braved the heat of Delhi through the day, but they didn't get to see their favorite boy, the son of the soil. The king is back in his kingdom, and we are there. Not out, batted the day out yesterday, and alongside him, Yash Dole, 17 undefeated in that partnership of 30 between Delhi and Railways. I'm Fazal Khalil. Very good morning, Rajat Bhatia. गुड मॉर्निंग। और जिस तरीके से आप उम्मीद करते थे, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे विराट कोहली, पैड पहन के बिल्कुल तैयार हैं। रेलवे की कोशिश ये होगी कि जितना जल्दी हो सके दिल्ली की पारी को स्कोर से पहले समाप्त करें। शुरू में अपील ज़रूर हुई है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लेग स्टंप को मिस कर रही थी। केवल 3 ही गेंदबाज अब तक यूज़ हुए हैं और पहली गेंद उसमें स्विंग भी देखने को मिला। ऐसा लगा कि बल्ला लग गया है। रामाकृष्णन को आउट किया था, बॉल कैरी नहीं हुआ और उस गैप में भी गया। 4 रन मिलते हुए यहाँ पे यशदुल को। यही सबसे अच्छी चीज़ होती है जब आप अपना पूरा पैर निकालते हैं। कई बार आपका पैर पूरा नहीं निकलता ना, तो फिर वो जो गेंद है ना, वो बड़ी आसानी से स्लिप तक भी कैरी हो जाती है। और वो गेंद जो है ना, उसमें या 50 पे 4 विकेट आउट थे। इस बार पूरी तरीके से इस शॉट में अपनी ताकत झोंकते हुए एक और 4 मिलते हुए यहाँ पे। Well, the old golden rule of if you slash outside their off stump, slash hard, takes it over the fielder at gully comfortably, and beautifully struck there. Stand there and admire that shot, young man. That's a beauty. लाजवाब स्ट्रोक। पिछले ओवर में भी वो 2 चौके आए थे और इस ओवर में भी। इस ओवर में जिस तरीके से बॉल को टाइम किया, गैप ढूंढा, जोर से मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने देखा था जो इनको पिछला चौका इस गेंदबाज के खिलाफ मिला था ना, उस समय बहुत जोर से मारा था उस स्ट्रोक को। बॉल tucked away on the onside. A couple of runs at least for the left-handed Sanath. They're running hard, looking to convert it into a 3. And looks like the ball has won the race out there. Good effort, but this is a fast outfield at the Arun Jaitley Stadium. Confirmation coming from Nand Kishore. Nicely timed shot from the left-handed Sanath. या बिल्कुल गुड हेड पोजीशन। सांगवान एक स्पेल के बीच में दूसरी छोर से अच्छा स्पेल करे थे, अच्छा चेज लगाया, बट अंत में उस कॉन्टेस्ट में गेंद और ये आउटफील्ड जीत गया। There's a slow दोनों बल्लेबाजों द्वारा goes off the edge and that'll go to the boundary as well. Not really convincing enough, but what the left-hander has done is that he's tried to get close to the ball and play with soft hands, and that's why the edges are not carrying to the slip fielders. You see the ball just falling short, way short of the fielders in fact. वहां पर जनरेट किया सनत ने, बट ये भी अच्छा लाइन, अच्छा लेंथ कुणाल द्वारा। Once again the bowler is unlucky, having to come second best even though he's done really well. The left-hander thrusting out to a delivery way outside the off stump, and it goes off the edge to the boundary. Kunal is disappointed. उठाना होगा दिल्ली के बल्लेबाजों को। Change of angle for the left-hander, and he's given. He thought about it, he had a long look, and then he decided that Yashzul was in front of the stumps, and Yashzul can't believe it. The crowd is obviously roaring. They know that Virat Kohli will walk out to bat, but first we'll have to wait and see if this is a legal delivery. And this is what we are talking about. That ball lipping back into the right-hander. And the
left arm seamer strikes for Railways. बिल्कुल अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले अराउंड द विकेट आए राहुल शर्मा। इस बार लाइन भी बेहतर, लेंथ भी बेहतर। 32 पर आउट यशदुल, 78 for 2 दिल्ली। Reads Virat Kohli on his return to the Delhi lineup after 12 years at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi. Familiar walk and then very purposeful walk as well. Striding with great purpose and confidence as always. Confidence is something synonymous with Virat Kohli. And he'll be up against the left arm seamer Rahul Sharma, who has provided a breakthrough for Railways. All the cameras are in action in the stands. The crowd. No ball from the left arm seamer. Surprises Virat Kohli with a good Yorker, Rahul Sharma. That one. Bat on ball, but straight to the fielder. 79 for 2. Coming into him again, no ball again. There's a little extra effort on the part of the bowler. I'm fine with that. The effort that you need to get a player like Virat Kohli out. But a huge no ball this. Effort is one thing and effort wasted is another, and that was a wasted effort. Well, he seems to be under the cosh at the moment. और देखिए वो जो नो बॉल्स हो रही है ना, वो शायद इस वजह से भी क्योंकि आप तेज गति से गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो एफर्ट मारने Off the mark is Virat Kohli. That will calm his nerves and calm 10,000 other. ये जो विराट कोहली के टॉप स्कोर्स जो दिल्ली के लिए उन्होंने बनाए हैं, उसमें जो सबसे ऊपर 197 पाकिस्तान की जो चैंपियन साइड थी डोमेस्टिक की, वो यहाँ पे खेलने आई थी। And no one can doubt that commitment, the contribution that he's made, the joy that he's brought on a billion faces in this country mad about cricket. Let's take a look at that off the middle of the bat. Year after year, match after match for the country. So everyone watching this telecast, probably one of the greatest to don those India colours. A successful batsman, a tag on his helmet. Well, oohs and ahs galore, but Virat Kohli survives, much to the delight of this huge crowd at the Arun Jaitley Stadium in the national events that have been made in the recent past. Can just be put to rest by the kind of achievements that we are showing of him. Well, it's really well bowled again, sparring outside that off stump. Luckily, he didn't get at the Arun Jaitley Stadium. And what a gesture this. Just two others apart from Virat Kohli have played 100 test matches for India from Delhi. Virendra Sehwag. ये स्ट्रोक में विश्वास दिखा है। इस स्ट्रोक में वो बात दिखी है जिसके लिए कोहली जाने जाते हैं। बॉल की पिच पे गए और करारा स्ट्रोक खेलते हुए, तीर की माफी एकदम सीधा। Well, just stamping his authority there is Virat Kohli. Just a little shimmy down the track and just bludgeoned that really. He gave it everything, and lucky for the bowler that he didn't get his foot on the ball. That would have been some damage to his shin. Very lucky there, the bowler, on that occasion. Virat Kohli now 6 of 14. Oh, he's gone! Big moment this. Virat Kohli is off stump. Knocked back. Sweet revenge this for Sangwan. And Delhi lose their third wicket. The crowd at the Arun Jaitley Stadium has absolutely gone silent. जी हाँ, ये लम्हा सांगवान को हमेशा याद रहेगा। इससे पिछली गेंद पे चौका जरूर खाया था, पर इस गेंद को बैट और पैड के बीच में से उस गैप को निकालते हुए, ऑफ स्टंप को इस तरीके से उड़ाते हुए, विराट कोहली को पेविलियन भिजवाते हुए। जी हाँ, विराट कोहली
पेविलियन लौटते हुए केवल 6 रन बना के दिल्ली मुश्किलों में। Well, unbelievable scenes here at the Arun Jaitley Stadium. The crowd, stunned silence there. With the skipper out there in the middle. But what a moment this for Sangwan. Perhaps इससे पिछला गेंद बॉल की पिच पे थे, पर ये वाला गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आया। ऐसा लगा कि पिछले शॉट का जो विश्वास था वो इस शॉट में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर इस शॉट को खेलने चले गए। जी हाँ, काफी समय तक इस चीज को याद रखेंगे सांगवान। विराट कोहली थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट दिखते हुए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंट